नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द फुटबॉल वार्डिक। मैं सौम्यदीप आ चुका हूँ एक नया वीडियो, एक नए लाइव के साथ। और आज हम कवर कर रहे हैं मोहन बगान का मैच, जो कि है डेम्पो के साथ। और यहाँ पे जैसे मैंने पहले मैच में कहा था कि मोहन बगान के जर्सी में टाइटल स्पॉन्सर नहीं है, वो इस मैच में लग चुका है। इस मैच का टाइटल स्पॉन्सर CESC है। तो वही जर्सी को यहाँ पे वापस उन्होंने ला के अपने जर्सी में भी अपना टाइटल स्पॉन्सर को ऐड कर दिया और यहाँ पे मैच स्टार्ट हो चुका है। सो लेट्स गो यहाँ पे। एंड देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस डन इन दिस मैच। तो वो सारा चेंजेस अभी हम डिस्कस कर लेते हैं विद द मैच गोइंग ऑन। एंड उसके पहले जस्ट लेट मी मेक वन चेंज हियर, दैट इज आज का मैच है डेम्पो के साथ। लेट मी सेट द बैनर। या सो अभी भी मैच स्टार्ट हो गया एंड देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस। मोलिना मेड अ होल रिवर्सल ऑफ द टीम। जो टीम हमने लास्ट मैच में देखा था, वो पूरा टीम यहाँ पे चेंज हो चुका है। एंड हमने बहुत चेंज यहाँ पे देखा है। कमेंट्री में ऑफ कोर्स पुलस्तर के साथ है सुयश भाई। सुयश भाई इज बैक इनटू कमेंट्री आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो वी आर रियली एंजॉयिंग लिसनिंग टू सुयश भाई हियर। एंड विद दैट बीइंग सेड, लेट अस डिस्कस द lineup here ऑफ मोहन बगान, जहाँ पे गोलकीपर में ऑफ कोर्स नो चेंज। विशाल केत इज हियर। टॉम एल्ड्रेड को यहाँ पे रखा गया है। उनके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास बैक करते हैं एज कैप्टन डीमी पेत्रातोस। तो मैंने जो पिछले रिव्यू में भी आपको बताया था कि डीमी पेत्रातोस को यहाँ पे गेम टाइम मिलना चाहिए टू गेन कॉन्फिडेंस फ्रॉम दीज मैचेस, क्योंकि आगे जाके उनको यही कॉन्फिडेंस से हमें सर्विस मिलेगा। तो फाइनली ही गॉट वन हियर। एंड उनके साथ ऑफ कोर्स रॉबसन को बैक किया जा रहा है। तो आई गेस डीमी पेत्रातोस विल प्ले मोस्टली इन द यू नो नंबर 9 रोल। एंड विद दैट रॉबसन को यहाँ पे कैम का या फिर लेफ्ट विंग, और स्पेसिफिकली ज्यादा हम लेफ्ट विंग में देखेंगे। एंड सहाल जो है, सहाल विल बी देयर इन द कैम रोल। उसके साथ सूर्यवंशी थोड़ा डिफेंसिव में खेलेंगे। उनके साथ खेलेंगे दीपक टांगड़ी। एंड एट द बैक फोर वी हैव दीपेंदु, वी हैव आशीष, वी हैव अभिषेक, वी हैव टॉम एल्ड्रेड। तो ये बैक बहुत एक मतलब द सेकंड बैच ऑफ प्लेयर्स जो है हमारे पास है। तो दो लाइनअप यहाँ पे डिफेंस का हमारा बन जाता है। तो दिस विल बी द वन विच विल बी द बैकअप डिफेंस लाइन फॉर अस। यहाँ पे बेंच में ऑफ कोर्स बड़े बड़े नाम है हमारे। थापा है, मनवीर है, शुभाशीष है, कियान है, एल्बर्टो, मैक्लैरन, देन वी हैव अपुया, मेहताब एंड सुहेल। तो मैं चाहता हूं तो सुहेल को भी इधर गेम टाइम मिले। इट विल बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। एंड यस, किसका कमेंट आ रहा है हमें जरूर देखना है। जुनैद, जुनैद इज ट्रैवलिंग टुनाइट एंड he was here with me covering the Tri Nations tournament of India, and he is finally traveling back to home. Finally, no listen, yeah, of course, finally no listen. ये बहुत बहुत खुशी का न्यूज है हमारे लिए। एंड फाइनली लिस्टन गॉट द डिजर्विंग रेस्ट। और आई होप दिस रेस्ट, ये जो रेस्ट है ये चलता रहे। इट विल बी गुड फॉर आवर टीम, इट विल बी गुड फॉर इंडियन फुटबॉल। और इसके साथ या ही आल्सो सेज, डिड मोलिना वॉच द प्रीवियस डेज रिव्यू वीडियो? ऑफ कोर्स, आई बिलीव मेरा बात मोलिना तक पहुंचा है, जिसके वजह से ही ये जो है हम देख पा रहे हैं। वेल, नंबर 9 रोल, this lineup seems more like, yeah, Jason Cummings है यहाँ पे. So the thing is, Jason Cummings will be playing in the number 9 role. एंड कैम, फिर मैं जो देख के समझ रहा हूँ कि शुरुआत से डीनी इज बैक इनटू द कैम रोल। एंड रॉबसन को लेफ्ट विंग का यहाँ पे जिम्मेदारी मिला है। एंड रॉबसन विल बी देयर। एंड राइट विंग में आई थिंक राइट विंग में कौन खेलेगा? सहाल, सहाल, डीमी। आई थिंक डीमी और सहाल मिलके राइट विंग का देखेंगे। डीमी जब कैम होंगे तो सहाल उस साइड जाएंगे। शॉट था यहाँ पे, बट गोलकीपर के पास बॉल, देयर वाज नथिंग मच टेस्टेड। रॉबसन का यहाँ पे शॉट था, ब्रिलियंट एक शॉट अपना जगह बना के। जुनैद कह रहे हैं द रेस्ट टू रिटायरमेंट, या ये होना चाहिए। इट्स अ ह्यूज लिसन, बहुत रिस्पांसिबिलिटी ली थी, अभी उसको थोड़ा रेस्ट मिलना चाहिए। और ये रेस्ट
रिटायरमेंट तक होना चाहिए। हेड कोच ऑफ डेम्पो समीर नायक। वेल लास्ट ईयर आई लीग में डेम्पो प्लेड ग्रेट फुटबॉल। If you know, I have been to their matches, so I know how much good football Dempo played, and शिलोंग लाजोंग के खिलाफ भी उनका गोल्स वगैरह। तो कुछ कुछ अच्छे फॉरेनर्स थे उनके पास, बट आई डोंट नो व्हाट्स द करंट सिचुएशन। इट्स रियली डिफिकल्ट टू गेट पास्ट अभिषेक तेकचम सिंह भाई। आप जितना भी नटमेग कर लो, आप नहीं कर पाओगे। एंड दैट वाज एविडेंट हियर। या थ्रो इन फॉर मोहन बगान भाई, थ्रो इन फॉर मोहन बगान। एंड इसके पहले वाले मैच के बारे में अगर बात करें तो ईस्ट बंगाल ने हरा दिया है चेन्नई एफसी को विद द स्कोर लाइन ऑफ 4-0। तो दैट इज समथिंग ह्यूज। अच्छा, एक बहुत अच्छा शॉट था विनय की तरफ से, नंबर 11 जर्सी ऑफ डेम्पो। जस्ट हम देखेंगे आउटसाइड द बॉक्स एक शॉट था, बट या ऑफ कोर्स ऑफ टारगेट, विशाल वाजंट टेस्टेड एट दिस मोमेंट। दैट्स अ गुड थिंग हियर। एंड Dempo is slowly building up their game, coming up, trying to invade Mohun Bagan's backline. But at the same time, they will try to exploit Mohun Bagan's defense. But Mohun Bagan has to be aware of what they are doing, has to be aware with the tactics. That will be really important for Mohun Bagan. Goal kick. विशाल का एक लॉन्ग रेंजर दीपक टांगड़ी के पास से बॉल आगे बढ़ा है। रॉबसन थोड़ा सा हेवी टच हो गया, पुश एंड फाउल। की प्लेयर्स टू वॉच इन दिस मैच फॉर डेम्पो। वेल जस्ट अ सेकंड, आई हैव टू चेक डेम्पो में कौन कौन खेल रहा है, बिकॉज आई हैव सीन डेम्पो लास्ट सीजन, आई रिकॉल many of them, but at this moment just let me check once, बताता हूँ आपको। या तो यहाँ पे हम डेम्पो के तरफ से देख पा रहे हैं आशीष सीबी, डैनियल, पृथ्वेश पेडनेकर, एरिस्टन कोस्टा, अमय मोराजकर, विनय विजय हारजी, वीरा कोलासो, शुभम रावत, सयेस बांकर, सेगोमांग डोंगिल एंड मोहम्मद अली। तो ये जो डोंगिल है, आई थिंक ही इज फ्रॉम मणिपुर। ओके, आई थिंक ही इज फ्रॉम मणिपुर। आई वाज बीइंग टोल्ड अबाउट हिम। तो यहाँ पे अगर की प्लेयर्स इफ यू वांना से, देन आई विल से नंबर 11 ऑफ कोर्स विनय हारजी। ही इज वेरी मच वेरी मच टैलेंटेड, एक्सट्रीमली टैलेंटेड। एंड एट द सेम टाइम डोंगिल को हमें अच्छे से देखना है। एरिसन कोस्टा बैक में मिडफील्ड में खेल रहा है, तो या ही इज ऑफ कोर्स एज ही इज कैप्टन टेकिंग अप द रोल्स, सो ही हैज टू बी लुक्ड आफ्टर। एंड अगेन शुभम रावत, ऑफ कोर्स वी जो आई लीग फॉलो करते होंगे उनको पता है शुभम रावत बहुत दिनों से ही इज इनटू द सर्किट, सो ही इज आल्सो समवन टू लुक आफ्टर दिस मैचेस। तो इन चारों प्लेयर्स को अगर आप थोड़ा सा देखें तो या इट विल बी गुड फॉर अस, वी हैव टू मार्क देम। बट अगेन एट द सेम टाइम वी हैव टू प्ले अ नेचुरल गेम। नेचुरल गेम खेल नहीं खेलेंगे तो नहीं होगा, वी कांट compete। तो that is why we should not change our tactics much। जो था हमारा वही रहना चाहिए, and we can do it। Your thoughts about the debutant team Delhi? Well, सेटअप सेम ही है, हैदराबाद का सेटअप ही उठा के लाया है, जस्ट नेम चेंज हुआ है, तो नथिंग एज सच टू से अबाउट दिल्ली। दिल्ली इज डूइंग, आई मीन लाइक उनको टाइम लगेगा थोड़ा सेटल इन करने में, बिकॉज वी हैव सीन लाइक लैक ऑफ एक्सपीरियंस जो था हैदराबाद हैदराबाद टीम में, तो वो चीज़ खलेगी दिल्ली को भी। until and unless they get some good signings, Delhi will keep on suffering, not getting the result they expect। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ था अपना दिल्ली का फ्रॉम हैदराबाद, दैट हैज ओनली बीन बिकॉज ऑफ द फैन इन्वॉल्वमेंट, वो प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा था, एंड दैट इज द रीजन व्हाई हैदराबाद से वो दिल्ली में आए हैं। अब दिल्ली में दे एक्सपेक्टिंग सम मोर फुटबॉलिंग कल्चर, मोर फैन इन्वॉल्वमेंट, एंड एट द सेम टाइम पंजाब भी है, दिल्ली भी है, तो वी हैव सीन हाउ दिल्ली हैज रिस्पोंडेड टू फुटबॉल विद पंजाब। तो
ये मूव आई डोंट नो हाउ मच गुड इट विल बी, बिकॉज़ at one time we have seen Delhi Dynamos had to shut because of the lack of fan engagement. तो उधर ही फिर से वापस जाना, I think it's a suicidal move. And नहीं much जुनैद कह रहा है कि मच नीडेड ट्रांजिशन दे विल श्योरली गेट द फैन इन्वॉल्वमेंट। नहीं भाई, दिल्ली डायनामोस का प्रोजेक्ट जैसे बंद हुआ था तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि दिल्ली से इतना सपोर्ट कभी मिलना पॉसिबल है, बिकॉज़ इफ यू सी उस टाइम दिल्ली में ऐसा नहीं है कि दिल्ली डायनामोस के बाद कोई टीम खेली नहीं है। पंजाब हैज़ बीन प्लेइंग देयर सिंस दे केम टू आईएसएल, तो वी हैव सीन हाउ मच सपोर्ट दे आर गेटिंग इवन आफ्टर हैविंग फ्री टिकट्स। ज़्यादा अटेंडेंस नहीं हो रहा है उनका। दैट इज़ द मैक्सिमम यू कैन एक्सपेक्ट। जो अटेंडेंस पंजाब ड्रॉ कर रही है उससे कुछ थाउज़ेंड्स इधर-उधर होगा, दैट इज़ द मैक्सिमम यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिल्ली क्राउड। तो उसलिए दिल्ली में वापस से जाना टू गेट अ फ देख, ऑफलाइन ऑफलाइन में फैन इन्वॉल्वमेंट होना बहुत मुश्किल है। ऑनलाइन आपको सपोर्ट मिल भी जाए, ऑफलाइन करना ये चीज़ बहुत मुश्किल है। एंड पंजाब हैज़ बीन ट्राइंग बट हैज़ नॉट येट यू नो सक्सेस नहीं मिला उनको। सो देयर इज़ नथिंग मच वी कैन से अबाउट दैट। The capital of India with no such fan involvement in football. या क्या बताएँ इसमें? देखो, फैन इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा नहीं कि फैन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट इंडियन फुटबॉल में नहीं है। वो उनका इन्वॉल्वमेंट फुटबॉल में है, बट इंडियन फुटबॉल में नहीं है, उनका यूरोपियन फुटबॉल में है। आप आज यहाँ पे दिल्ली में आप मैच करवा दो किसी यूरोपियन टीम का, फिर सपोर्ट देखो, यू विल गेट द सपोर्ट देयर। तो ये जो क्राउड्स होते हैं, जो ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज में यूजुअली, एक्सेप्शंस ऑफ कोर्स है, कोलकाता एक्सेप्शंस है। मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो क्राउड होता है वो बहुत इन्फ्लुएंस्ड होता है। एंड ये थोड़ा आपको सुनने में हार्श लगेगा, बट दिस इज द एब्सोल्यूट रियलिटी। जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में फैंस होते हैं, दे आर मोर शो ऑफ फैंस, उनको फुटबॉल का ज्यादा समझ, मतलब नॉट ऑल बट या ऑफ कोर्स देयर आर पीपल हु वॉचेस फुटबॉल जस्ट फॉर शोइंग ऑफ। अगर उनसे आप पूछोगे कि आपका फेवरेट टीम कौन सा है, दे विल से रियल मैड्रिड, और कोई टीम नहीं बोलेंगे, रियल मैड्रिड बोलेंगे बस। क्यों? बिकॉज़ दे आर गेटिंग सक्सेस, रियल मैड्रिड सक्सेस पा रहा है, इसलिए दोज़ आर ग्लोरी हंटर, उनको शो ऑफ करना है कि हमारे पास 15 यूसीएल है, ये है, वो है। जो डिबेट जीतेगा, जो टीम डिबेट में जीतेंगे, ये क्राउड उनको ही सपोर्ट करेगा। ओके, तो वही होता है। तो दैट इज़ द रीज़न व्हाई व्हेन यू सी दिल्ली का क्राउड, अगर मैं बोलूँ, हाइली दे आर मैनिपुलेटेड विथ दीज़ थिंग्स, हाइली इन्फ्लुएंस्ड। उनको शो ऑफ करना है बस, उनको फुटबॉल का समझ कुछ है नहीं। रेयरली कुछ कोई ऐसा बंदा मिलता है दिल्ली से, प्रणय भाई हो गए। भाई प्रणय भाई जैसे, अगर प्रणय भाई कितना अच्छा काम कर रहे हैं, उनको इंडियन फुटबॉल के लिए वो इतना कवर कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं। तो उन जैसे लोग ही है एक्सेप्शंस, जिनको फुटबॉल से एक्चुअली मतलब है। बाकी जो लोग हैं वो तो शो ऑफ के लिए फुटबॉल देखते हैं। दैट्स द थिंग। We have seen the support Barca Madrid when there was a match. Yeah, of course, we have seen lead content creators of India from most from Delhi as well. Not completely native to Delhi, I guess. कुछ बाहर से भी गए हैं, और या हो सकता है, नॉट ऑल बट ऑफ कोर्स कुछ कुछ तो है जो दिल्ली में रहते हैं। दे आर द एक्सेप्शंस, टू बी ऑनेस्ट। दे एक्चुअली नो बॉल, वरना बाकी लोग तो भाई दे विल बी लाइक जस्ट टॉकिंग अबाउट रियल मैड्रिड और कुछ नहीं। जो शो जो जीतेगा, जब वो एक डर्बी बारसा जीत गई, पांच मतलब बैक टू बैक जीता, तो यू विल सी सम बारसा फैंस आउट देयर इन दिल्ली। बट आफ्टर जब रियल मैड्रिड कुछ मैच जीतना शुरू करेंगे, दे विल ऑल शिफ्ट टू रियल मैड्रिड। यू कैन टेक देम इनटू अकाउंट। वेल, 13 minutes into the game, 14 minutes running. Dempo has been playing their natural game. Dempo has been playing their natural game. उतना मुश्किल में उनको पढ़ना नहीं पड़ा है। And they have been building attacks, but yeah, broken. The attack was broken here by Deepak Tangri. Dempo has been widening themselves, पूरा अपने आप को स्प्रेड करके, अपना मिडफील्ड को स्प्रेड करके यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं, जिसके वजह से उनके पास बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है फॉर अटैकिंग। एंड देखिए कैसे 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 क्रॉसेस डाल रहा है। तो ये चीज हमें
क्रॉसिंग रेंज में वी हैव टू डिप्लॉय मोर प्लेयर्स, जहाँ पे आई वुड सजेस्ट आशीष और अभिषेक को वो क्रॉसेस रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी देके अब अभिषेक सूर्यवंशी और दीपक टांगड़ी इनको थोड़ा सा डीप डिफेंस में उतार दो, so that they can work with Aldred and Dipendu टू स्टॉप अटैक्स। तो इसमें क्या होगा कि पीछे लोग भी बढ़ेंगे हमारा डिफेंस करने के लिए, एंड एट द सेम टाइम वो जो क्रॉसेस आ रहे हैं उनको भी हम तोड़ पाएंगे। एंड मार्किंग के लिए ऑफ कोर्स हमारे पास अंदर प्लेयर रहेगा, टॉम एल्ड्रेडा, दीपेंदु है, दे कैन मार्क द प्लेयर्स। And while that being said, Sahal hai, then we have Dimi, we have Robson, we have Cummings। यहाँ पे चांस था, बट या गोल किक यहाँ पे रॉबसन गए थे, बट बॉल थोड़ा सा ज्यादा तेज था उनके रफ्तार से। एंड 15 मिनट्स इनटू द गेम, मोहन बगान 0, डेम्पो 0। यहाँ पे चांस है अटैक में जाने का डेम्पो के पास, बट नहीं हुआ। एंड दे आर फाइटिंग, डेम्पो इज गिविंग देयर ऑल, बिकॉज उनको पता है कि इस मैच में उनको खोने के लिए कुछ नहीं है। एंड बहुत सालों बाद यहाँ पे डेम्पो और मोहन बगान फेस कर रहे ईच अदर को, अपने आप को फेस कर रहे हैं बहुत सालों बाद। तो ये राइवलरी वाज ऑलवेज स्पेशल, दिस राइवलरी वाज ऑलवेज स्पेशल ड्यूरिंग द आई लीग डेज। अगर आपको याद हो तो डेम्पो और मोहन बगान का जो राइवलरी था, मोहन बगान और गोनीज जो सारे क्लब्स थे उस टाइम, डेम्पो था, सलगावकर था, so those were the teams who were heavily involved in Indian football, those were the teams running Indian football। and अभी वापस से मिलना एक दूसरे को, that has been really good। and हेड टू हेड के बारे में बात करें तो मोहन बागान और डेम्पो टोटल 10 बार मिले थे, जहाँ पे बस मोहन बागान ने 2 बार जीता, 4 ड्रॉ हुए थे और 4 जीता डेम्पो ने। एंड क्या हेड टू हेड तो यही दिखा रहा है बस। र- नहीं, ये थोड़ा सा गलत है, ये हेड टू हेड रिकॉर्ड थोड़ा सा गलत है। लेट अस टॉक अबाउट लास्ट हमने फेस किया था डेम्पो को 2014-15 सीजन में। वो मैच मोहन बागान ने 2-0 से जीता था। 22 मार्च 2015, 20 तो उस सीजन में हमने जीता था। राउंड 12 का मैच था, उसके पहले एक-एक ड्रॉ हुआ था जब मैच हुआ था डेम्पो के होम में। फिर जाके फर्स्ट मैच जो इन दोनों का था वो नेशनल फुटबॉल लीग में था, 1996 टू 1997, जहाँ पे डेम्पो 1-0 से मोहन बगान को हराई थी। तो इफ वी टॉक अबाउट द मैचेस, 41 मैचेस खेले गए यहाँ पे इन दोनों टीम के बीच, जहाँ पे 14 मैचेस जीता डेम्पो ने, 12 हुए ड्रॉ और मोहन बागान ने जीता 15। डेम्पो ने इन 41 मैचेस में किए 59 गोल्स और मोहन बागान ने किया 57। एंड उसके बाद टॉप गोल स्कोरर रहे इन फिक्चर्स में वो मोहन बगान के बाईचुंग भूटिया, बलवंत सिंह, शायद नबी, और यहाँ पे डेम्पो के लिए कैलम एंगल्स और राइजू सियोका। तो ये थे की प्लेयर्स। अटैक पे मोहन बगान 1-2 खेल के रॉबसन और डीमी हेड था यहाँ पे, फिर से कोशिश रहा, बट या गोलकीपर के पास बॉल, आशीष का एक हेडर, जेसन भी गए थे बट या कुछ नहीं हुआ उस मोमेंट में। चिरायू कह रहे चामिली दा, हाय भाई चिरायू, शाउट आउट या शाउट आउट, चिल्लाओ अपना नाम जोर से। ओजी ओजी या ओजी।
और दादा कैसा चल रहा? बस कॉलेज से आया हूँ, आते ही बैठा। फर्स्ट 15 मिनट्स रियली बोरिंग, बहुत। और टेम्पो को अगर आपको तोड़ना है तो यू हैव टू गेट योर अटैकर्स देयर इन द पिच। अगर आप अटैक नहीं करोगे, अगर आप कंटिन्यूअसली अटैक नहीं करोगे, टेम्पो कभी भी काउंटर अटैक पे आके आपको तोड़ सकते हैं। पढ़ाई और यूट्यूब कैसे मैनेज करे, कोई इनसे सीखे। भाई पढ़ाई लिखाई मैं नहीं करता। छी। पढ़ाई पढ़ाई क्या होता है? पढ़ाई लिखाई करके कोई बड़ा आदमी बना है थोड़ी। पढ़ाई लिखाई मत करो। दादा की फिलोसफी चेंज लाइफ, द फुटबॉल अटैक करना इज मैंडेटरी। चेंज लाइफ, द फुटबॉल अटैक करना इज, कहना क्या चाहता है भाई? दादा की फिलोसफी चाहे लाइफ हो या फुटबॉल अटैक करना इज इम्पोर्टेंट। बैलेंस्ड वे भाई। हर टाइम अटैक करने से भी नहीं होता। यू हैव टू सेव योर हाउस बिफोर अटैकिंग। अभिषेक टेक्चम, पिच का कंडीशन बहुत खराब लग रहा है भाई। पिच इज रियली बैड। बॉल रुक रुक के आ रही है। इतना बारिश हुआ एंड हर रोज अगर मैच चलेगा तो इट विल बी रियली डिफिकल्ट फॉर द पिच टू बी गुड। तो उसलिए ये चीज देखना चाहिए था। पिच इज नॉट इम्प्रूव्ड। इतना बारिश हुआ, ऑफ कोर्स फील्ड में पानी जम के कल मैच हुआ, जो इतना बारिश हुआ उसके वजह से यहाँ पे पानी, फील्ड पूरा नरम हो गया एंड विद दोस रनिंग्स एंड ऑल, देन इट विल बी रियली डिफिकल्ट। हेमंत कह रहे हैं एमबीएसजी हार 6। The score is still nil-nil. I don't know how MB is losing the game. I mean like अगर कंसीड नहीं करेंगे तो हारेंगे कैसे? बट ये अगर आपका ये फुल टाइम प्रेडिक्शन है तो फिर ठीक है। देन वी कैन सी। चिरायु कह रहा है लाइफ या फुटबॉल अटैक करना ही चाहिए। करो भाई अटैक। यहाँ पे चांस था बट भाई देखो कितने सारे यहाँ पे डेम्बो के प्लेयर्स डिफेंड कर रहे हैं। जस्ट सी द नंबर्स दे हैव कमिटेड आउट देयर। बस दो अटैकर्स है एंड रेस्ट एवरीवन इज डिफेंडिंग। सो अगर मोहन बगान ज्यादा लोग ऊपर कमिट नहीं करेंगे ना, रियली डिफिकल्ट, इट विल बी रियली डिफिकल्ट। रॉबसन थोड़ा सा जगह बनाने का कोशिश बट नहीं हुआ, मिस पास इंडिया। इंडिया का बेस्ट फुटबॉल यूट्यूबर कौन? अबे नहीं भाई, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं ऊपर, उनके ऊपर मैं कैसे? दे आर मोर डेडिकेटेड भाई, दे मेक गुड कंटेंट्स एंड कहीं नहीं आता यहाँ पे। बट 24 मिनट्स हो गया मैच में, मजा नहीं आया अभी तक टू बी ऑनेस्ट। आपको कैसा लगा मैच? आप जरूर मुझे बताओ कैसा लग रहा है, क्या चेंजेस आप चाहते हो। जेसन कमिंग्स के पास बॉल है। जेसन कमिंग्स जगह बनाने की कोशिश, गोलकीपर का एक टच एंड बॉल वेंट आउट फॉर अ थ्रो इन। जेसन कमिंग्स ने यहाँ पे अपने लिए जगह बनाने का कोशिश किया एंड
या आशीष राय, आशीष टू साहल, साहल टू अभिषेक, अभिषेक टू रॉबसन, जेसन, बट या लोगों के पैरों के बीच यहाँ पे बॉल रुक गई। लिंक मांग रहे हैं, जस्ट लेट मी सी where do we have links or whether we have links or not। मैच वैसे जियो हॉटस्टार में दिखा रहा है, यू कैन चेक दैट आउट देयर। अभी तक ऐसे मुझे कोई लिंक मिला नहीं है। ओके, बट यू कैन गो टू जियो हॉटस्टार टू चेक दिस। अभी आशीष, चांस था बट या हेडेड आउट। रिबाउंड में अभिषेक टेक्चम के पास बॉल, बॉल गवाया। ये बहुत गंदा टैकल है, येलो कार्ड भाई, येलो कार्ड मोहन बगान के प्लेयर। अभी दीपेंदु का एक बहुत रैश चैलेंज था, क्लियर कट येलो कार्ड दिया, डिजर्विंग येलो भाई, डिजर्विंग येलो। लाइव लिंक नहीं है रंगा भाई, फाइन आप जियो हॉटस्टार में एक बार ट्राई कर सकते हो देखने का। मैच से बढ़िया तो आप समझ लेगा। सेटअप तोड़ देना अगर वापस टीम हारती है तो। भाई मैं फिर तेरे रूम में शिफ्ट कर जाऊंगा भाई। जेसन, वो एंगल से नहीं होता, उधर कोई टैप इन करने के लिए चाहिए था। एंड वी नो हु शुड हैव बीन इन दैट पोजीशन। जेमी मैकलारेन अगर रहते तो वो कुछ कर पाते, बट ये बहुत बहुत रैश टैकल था यहाँ पे दीपेंदु की तरफ से। तो दैट विल बी रियली समथिंग टू लुक एट। सेकंड हाफ में नहीं किया जा सकता। ये ये सेम टैकल हुआ था लास्ट एल क्लासिको में, पेद्री का टैकल, अगर आपको याद हो। ही डिड द सेम सॉर्ट ऑफ टैकल आउट देयर। तो वो सेम लेवल का टैकल यहाँ पे कर दिया दीपेंदु ने। डेम्पो, कितना बड़ा स्पेस बन चुका है डेम्पो का क्रॉस, बट या ऊपर से चला गया बॉक्स का। आ, एक बहुत बड़ा स्पेस बन चुका था जिसका एडवांटेज यहाँ पे डेम्पो ने उठाने का कोशिश किया, जिसके चलते यहाँ पे एक अच्छा अटैक करने का मौका मिला तो था। बट मोहन बगान्स गेम हैज बीन वेरी वेरी बैड दिस सीजन, वेरी बैड। थिंग्स हैज टू गेट इनटू प्लेस। अगर नहीं होगा दैट विल बी रियली रियली डिफिकल्ट फॉर देम। गोल किक फॉर मोहन बगान, एंड यहाँ पे विशाल ले रहे, एक विशाल शॉट हेड किया है। देखिए आज मेन प्रॉब्लम मोहन बगान का मिडफील्ड का है।
because there is no player who will build the game. Abhishek Suryavanshi has not been able to do that role much. वो बहुत ही डिफेंसिव ओरिएंटेड प्लेयर है। वो पोजीशन जो थापा लेता है, जो रोल थापा लेता है, he cannot be replaced. And if you say I'm really biased with the you know midfield pair of Apuya and Thapa, I know हर मैच में नहीं लिया जा सकता, we cannot be heavily dependent on them, but हमारा गेम वो चलाते हैं एक्चुअली। आइदर थापा Apuya और थापा दीपक, थापा हैज टू बी देयर, क्योंकि वो जो रोल प्ले करते हैं ना, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। वेल यहाँ पे 30 मिनट ऑलरेडी हो चुका है एंड दीपेंदु का एक लॉन्ग क्रॉस था, हेड करके नीचे रखने का कोशिश, बट पोजीशन यहाँ पे मोहन बगान बॉक्स के बाहर ले गए। अभी बैक से फिर से बिल्डअप करना पड़ेगा। दीपक थोड़ा सा डीप चले गए हैं एंड बॉल इज स्टिल विद दीपेंदु। डीमी थोड़ा सा नीचे आ गए तो टॉम टॉम देख रहे कि क्या किया जा सकता है। आशीष ने उनसे बॉल लिया है, आशीष से वापस से दीपक के पास बॉल, दीपक टू दीपेंदु, दीपेंदु टू धीमी, धीमी से रॉबसन, रॉबसन यहाँ पे रन बनाने का कोशिश, बट ना अभिषेक, अभिषेक ने कुछ कर नहीं पाया। डीमी के पास वापस बॉल, धीमी से यहाँ पे टॉम एल्लिट अगेन, टॉम एल्लिट देख रहे हैं, लॉन्ग एक शॉट रहेगा, वापस से अभिषेक के पास जाएंगे। अभिषेक का छोटा सा पास डीमी के लिए, डीमी वापस से अभिषेक को देके, अभिषेक क्या करेंगे इस पोजीशन से, एक क्रॉस उठाना चाहिए, बट या अगेन प्लेयर्स इतना डेम्पो ने रखा है ना अपने बॉक्स में, तो वहां से स्पेस बनाना बहुत this. Any link to watch outside India, please? One Football is not streaming. Uh, you can try apps like Crickfy or Play TV. You might get link there. You can try in Crickfy. I hope they are streaming there. Just try, see if it is happening. Is there? Hi, hi, my friend. I hope you're doing well. यू कैन ट्राई इन क्रिकफाई ऑफ कोर्स। क्रिकफाई में आप एक बार ट्राई करके देखो अगर उधर लिंक मिल रहा है तो नहीं। इफ नॉट देन टेल मी, आई हैव टू डू समथिंग अबाउट दैट। आई डोंट थिंक जियो हॉटस्टार आई कैन स्ट्रीम फ्रॉम जियो हॉटस्टार बिकॉज it's again like they restrict, so I can't stream using geo hotstar, but again I will try to find some links। अगर if anyone have links भाई जरूर हमें कमेंट्स में दीजिएगा, so that our friends from other places can also be a part of this game, they can see the game and enjoy it। यहाँ पे डेम्पो का अटैक था, बट या दे हैव दीपक टांगड़ी ने बचा दिया, दीपक टांगड़ी saved those attacks। is Crickfy available in Apple Store? No, Crickfy you can find it, you won't find in Apple Store, you have to download it, its APK from online browser। यहाँ पे डेम्पो के पास चांस था बट बॉल क्लियर्ड आउट। There's a huge chance for Dempo, but it has been easily cleared out. Again, they were in attacks. Ashish cleared out the first time, and now it's back with uh, Tom. And again, Mohun Bagan is out in a counter attack. Sahal to Robson. Robson is making a run. Dimi has been tackled badly from the back. That's why he's still injured out back there. He's not over in the attacks. That is the reason why we are not seeing him. He is finally back. Dimi, shot, Dimi, shot out of the box just by 2 feet। यहाँ पे Dimi has missed this attack। There was a slight deflection. There was a slight deflection for which this happened, and there was a huge chance for Dimi to score. But yeah, oh no, there was no deflection. Yeah, it was clearly missed. It was like the angle was not good।
No, we no bro, not able to download Quickfire. Wait, just give me a second. I think it's because you are using I think you are using iPhone. It will be really difficult for you to download an iPhone. I'm sharing you the link of Quickfire. You can download Quickfire from this link. So जिनको मैच देखना है, you can use this app. All the matches you can see around the world. Mohun Bagan is in attack. Robson's cross. Ashish and directly to the goalkeeper. And here is a huge miss by Ashish was in the right position. Just see how Ashish went up to the CF role and उन्होंने वहां पे अपने लिए जगह बनाया बट देयर वाज एक तो डिफेंडर था उसके ऊपर गोलकीपर कहीं से भी ये गोल नहीं होता एंड इज अ ह्यूज मिस फॉर मोहन बगान एट दिस मोमेंट मोहन बगान हैज been good in the attacks ऊपर जा रहे हैं but again they have to be more clinical in the final third only then we can expect something good from this team and Robson will touch and lost the possession here पोजीशन खो दिया डेम्पो के पास बॉल डेम्पो 1-2 खेल के मोहन बगान का डिफेंस तोड़ने का भाई मिसकम्युनिकेशन यहाँ पे विशाल आगे आ गए थे एंड टांगड़ी के बीच टांगड़ी के साथ कम्युनिकेशन उनका अच्छा नहीं रहा था डीमी इज मेकिंग यहाँ पे साहल साहल टू दीपक टू दीपेंदु टू रॉबसन टू अभिषेक अभिषेक ने एक लॉन्ग बॉल उठाया आशीष के लिए बट आशीष नहीं थे साहल के पास बॉल है साहल रन बना रहे हैं रॉबसन का शॉट आएगा क्या डिफेंडर्स इतने सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 प्लेयर्स ऑफ डेम्पो आर डिफेंडिंग वहां से कहीं से भी वो शॉट गोल पे नहीं जाता 9 प्लेयर्स उनके डिफेंड कर रहे हैं यहाँ पे so it would be really difficult for any team to break that defense but whole team is defending Demi now. Thank you for tuning in to my live stream from such a far away place. I saw your text. Okay. So yeah, Abhishek is back again. अभिषेक देख रहे अपने लिए जगह बनाते साथ आई थिंक टीम सिलेक्शन में थोड़ा सा दिक्कत है राइट विंग को भी नहीं जेसन के पास चांस है जेसन का शॉट आएगा क्या रिसीव थोड़ा लेट किया है क्या करेंगे जेसन ने क्रॉस बढ़ाया लेकिन कोई भी he just saw the ball passing away from him एंड वो अपने लिए इतना मुश्किल कर दिया देयर वाज अ नाइस बॉल फ्रॉम रॉबसन जेसन ने लेट रन बनाया जिसके वजह से उन्होंने यहाँ पे बॉल नहीं जीत पाया एंड क्लियर्ड आउट बाय डेम्पो अगेन देयर इज अ कॉर्नर फॉर मोहन बगान वेरी शॉर्ट बट क्लियर्ड आउट ड्रॉ लेट्स रिविजिट क्या हुआ यहाँ पे आशीष का एक क्रॉस था बट वो कॉर्नर किया लेकिन उसके पहले Robson give the ball. Jason failed to understand whether he will get the cross or not, and उसके वजह से यहाँ पे गोल नहीं हुआ. And again, yeah, this is again a goal kick for Dempo. 38 minutes into the game, nothing can separate both the teams. A very average gameplay, very average gameplay. And as things stands, it will be just the next match that will decide between the two. If Mohun Bagan wins,
या क्रॉस था बट अभिषेक टेक्चम फेल टू रीच एट दैट पोजीशन। अभिषेक अभिषेक के पास बॉल बढ़ाने का कोशिश था बट या ही फेल टू रीच एट दैट पोजीशन, जिसके चलते ये भी चांस जो था मिला वो उन्होंने खो दिया। डेम्बो के पास चांस है, विशाल केम आउट एंड सेव्ड यहाँ पे, वरना क्रॉस आ सकता था। बढ़िया आउटिंग यहाँ पे विशाल की तरफ से। एंड अगेन अ थ्रो इन एंड फिर से अटैक बिल्डअप करने की कोशिश डेम्पो का। भाई ये डिफेंसिव लैप्स नहीं होना चाहिए था मोहन बगान का। भाई ये चीज विल खलेगी मोहन बगान को। डिमी इज बैक। डिमी ने एक थोड़ा बैक पास देके सहाल को दिया। सहाल यहाँ पे बॉल गवा दिए यार। पोजीशन मेंटेन नहीं हो रहा है डेम्पो और बैक इन काउंटर अटैक। मैंस कमिट कर रहे हैं जल्दी। ट्रांजिशंस में डेम्पो इज डूइंग गुड। शेष टॉम एंड का क्लियरेंस एंड देयर वाज एन ऑफसाइड। भाई ट्रांजिशन में डेम्पो इज डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। डेम्पो इज brilliant in the transitions. Dempo is brilliant in the transitions. They're actually doing good. यहाँ पे अटैक पे जाते हुए मोहन बगान बट इट वाज टू मैक्लारेन इकार्डी। Let's swap. No, 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 no. We will be keeping Maka. I know you are loving. You want to see him in Galatasaray, but no. He is the only one who's scoring goals. Making the runs, making. He's the only good player in this team at this moment, who is actually doing something, involving himself and giving him his dedication throughout, fighting for the match. यहाँ पे डेम्पो का चांस है शॉट बट विशाल has the ball with him again. This is a shot from number 13 here. But yeah, Abhishek is making run. Abhishek through the channels, but again blocked. The Dempo is well settled in this match. Dempo has settled themselves very much, and for that is the reason why they have been able to, tackle out every attack of Mohun Bagan at this moment. इसकी वजह से Mohun Bagan is still, unable to score from this match at this moment. So we have to, there has to be something special done by Mohun Bagan bhai. Throw in for Dempo. Everything has been quite very much uh, normal. The only thing abnormal that happened here at this moment is Mohun Bagan not attacking. They have to do something. Throw in for Dempo. Back here, Sahal. Ball is with Dimi. Dimi to Ashish. Nice pass, Dimi. Ball is with Ashish. Ashish is fighting. Dempo with them players. Dipendu has the ball again with him and he's trying to build up. Tom Aldred cleared out. Bad tackle, bro. Tackle by on Tom Aldred is 50-50, but again, that was a bad. Icardi is good, but he's overweight and does not have 100% speed. Oh, when you say this, I recall him to be Mario Balotelli. Not no discipline, Mario Balotelli. So this is the 44th minute. देखते हैं how much time will be added here at this moment. Throw in for Mohun Bagan. Galatasaray has many good players. They don't need Jamie McLaren. In fact, Mohun Bagan is the only team that needs Jamie McLaren. Very basic gameplay. I think Mohun Bagan will make changes in the second half just to get the players ready for the derby.
But Derby has been like quite many times happening in this whole season. You know, we have seen Derby happening in Durand, we have seen in IFA Shield. So every tournament इधर उधर कहीं से भी Derby हो जा रहा है. And Jason Cummings here, we can see him looking good. There'll be a corner for Mohun Bagan. Dimi will be taking. I think Robson को देना चाहिए था. Robson had to take. डीमी का फर्स्ट पोस्ट में शॉट था कॉर्नर का बट नहीं हुआ. साहा लॉन्ग रेंजर लेंगे नहीं लेंगे. आशीष आशीष का क्रॉस किसके पास. डीमी के पास वापस. डीमी क्या करेंगे. डीमी 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 का यहाँ पे पास रॉब्सन के लिए. रॉब्सन क्या किसको दिया रॉब्सन भाई. होम. डेम्बो के पैरों के बीच में यहाँ पे बॉल को बढ़ा दिया. पता नहीं किसको दिया लेकिन दिया जरूर है. एंड अगेन यहाँ पे हेड आउट करने का कोशिश. फाइटिंग विद द बॉल एंड द क्लियर्ड आउट. यहाँ पे थ्रो इन फॉर मोहन बगान. थ्रो इन फॉर मोहन बगान. दीपक टांगड़ी से लेके दीपेंदु. एल्बर्टो यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस रोल ले रहे हैं इस मैच में. एज यू सी. And we are seeing Molina talking with the strength and conditioning coach. I don't know what, but they look disappointed. And with that being said, यहाँ पे फर्स्ट हाफ खत्म होता है. आई थिंक यहाँ पे भाई लोग यहाँ पे आई थिंक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच वाज रियली फ्राइटेंड टू सी मोलिना. फर्स्ट हाफ nil nothing to separate both the teams. And first half का story यही है कि both teams ended up in a draw. I think it's the one of like very first match बहुत दिनों बाद कि मोहन बागान failed to score in the first half. That's something to see. Mohun Bagan failed to score in the first half. And as that is the story, I will say first half has been really boring. Mohun Bagan could have done better. Attacks were not good. They were not having any kind of urgency. They didn't show urgency. Dempo has been quite defensive. So to break the defensive wall of Dempo, Mohun Bagan has done nothing. Absolutely nothing. कुछ नहीं किया मोहन बगान ने. They just tried their own that वो गेम प्ले जो उन्होंने सोच के उतरे थे. They have done just that. Nothing else. प्लान बी का यहाँ पे कोई एग्जीक्यूशन नहीं है. प्लान बी है कि नहीं वो भी नहीं पता. Whether there is plan B or not, we don't know. Demi is equal to Icardi, Jamie is equal to Osimhen. Bro is very much excited to compare Mohun Bagan and yeah, Galatasaray here. At one point, I want to say Fenerbahce, but yeah, it's not Fenerbahce, it's Galatasaray. I know if you you would kill me if I say that name of the team, but yeah, Victor Osimhen and this nice. Agreed because Osimhen is doing really good here for Galatasaray, and we hope he get the same success. But if you have Osimhen, then why would you want to have Jamie McLaren? I mean, let Jamie enjoy here. He's here to build his legacy. He wants to be the king here. Let him be. तो अभी थोड़ा सा टाइम है हमारे पास फर्स्ट हाफ का.
So what I will do is I'll take a short quick break because guys I just came from my college and फ्रेश अभी नहीं हुआ मैं अभी पूरा वो कपड़ों में ही हूँ तो let me fresh up. Give me like 10 minutes. I'll be back in 10 minutes and we'll be starting the second half together. And again, the story of the first half is Mohun Bagan nil and Dempo nil. So just stay tuned. I'll be back after some time, 10 minutes. Within 10 minutes, I'll be back and we'll be again starting a chat over this match. So this is Somideep going out for a short break.
वेलकम बैक माय फ्रेंड्स, सबको फिर से वेलकम बैक। जैसे मैंने कहा 10 मिनट में आ रहा हूँ, मैं 10 मिनट में आ गया। चलिए देखते हैं क्या सीन है मैच का, व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। या तो अभी भी पहले मैच का यहाँ पे रिप्ले चल रहा है। विद दैट बीइंग सेड, फर्स्ट हाफ नॉट गुड, could have been better, and things are not going in the right direction. कार्ड्स लेके मैं बैठ चुका हूँ, कार्ड्स दिखाऊंगा टू एवरीवन जहाँ पे गंदा टैकल्स वगैरह होगा। एंड वी आर वेटिंग फॉर द सेकेंड हाफ टू स्टार्ट। Yeah, the teams are back in the pitch. So we can see a change. Alberto came in place of Tom Alred, and Mehtab is back. Alberto and Mehtab are back here. Or that are the two changes we can see at this moment. Uh, किनके जगह पे आए? एल्बर्टो और मेहताब आए हैं। आई थिंक टॉम एल्ड्रेड इज आउट एंड आशीष, आई थिंक दीपेंदु इज आउट। टॉम एल्ड्रेड एंड दीपेंदु इज आउट मे बी। यस, सो गुड न्यूज फॉर माय फ्रेंड ए जो है यहाँ पे, एंड गुड न्यूज फॉर यू। जेमी मैक्लैरन इज here in the pitch, and with that being said, Mohun Bagan and Dempo will start this second half of the match. Ashish is there, so it's Dipendu and Tom Eldred. Yes, Dipendu and Tom Eldred are out. Ashish Rai is here still. Robson is here, so Dimi has been, I think. Wait, Aldred, Cummings is out. Aldred, Dipendu, and Cummings has been substituted, and in their place we have Alberto, Mehtab, and McLaren. So who is going to play the right winger role? I don't know. Dempo is in attack, making out spaces for themselves. Here they're fighting to get a shot, a space for shot, but नहीं हुआ, जिसके चलते बॉल अभी भी उनके पास है, बट बॉल पीछे चला गया, and their captain is down. I think he has been tackled. Oh, there was an ankle by. There was a shot by McLaren. Jamie McLaren is trying. Mohun Bagan has to, spread themselves up. Mohun Bagan has to spread their gameplay.
Mohun Bagan is in attack. Sahal to Robson, but he was tackled and lost the position. Alberto won it back, and Alberto के पास से यहाँ पे Sahal is here. Sahal to Dimi. Dimi is searching for space. I think he's be passing. Cross, headed out. Sahal. Nice Ankara Sahal, but yes, 4 to 5 players were there. Foul, bhai, foul. 4 to 5 players were there, surrounding Sahal, for which Sahal ने यहाँ पे अपने आप के लिए जगह बना नहीं पाए। ऐसे अगर टैकल हो गया, लेकिन ये जो स्किल है, ये बहुत ही तगड़ा स्किल था। आगे बढ़ के पीछे एकदम सडनली अपने लिए स्पेस, उनके ऊपर टैकल था, जिसकी वजह से उन्होंने पोजीशन खोया यहाँ पे। When Mohun Bagan has the position again, they are trying to build the game back. पीछे से गेम बनाने का यहाँ पे कोशिश चल रहा है मोहन बगान का। एल्बर्टो, कॉर्नर फॉर मोहन बगान। कॉर्नर देखते हैं कुछ होता है कि नहीं इस कॉर्नर से। एल्बर्टो को लाया गया फॉर दैट रीजन। एल्बर्टो लंबे कद के खिलाड़ी है, तो उनके लिए हेड करना इजी होगा। सेकंड पोस्ट में कॉर्नर था, बट हेडेड आउट, तो यहाँ पे फिर से गोल किक टेम्पो के लिए। 50 minutes into the clocks, 5 minutes into the second half, still no such great things to be seen. But yeah, Mohun Bagan has been quite composed and playing better. तो रॉबसन ने रन बनाया था, बट उन्होंने कुछ पाया नहीं। There was nothing he got in that position. So again, ball is back at Mohun Bagan, but भाई डेम्बो के शरीर में हमें प्लेयर्स के शरीर में हमेशा बॉल लग जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपना पोजीशन बार-बार खो जा रहे हैं। बट अगेन अभिषेक इज डूइंग अ ग्रेट रोल यहाँ पे बॉल पास करने का कोशिश, बट या वो नहीं हो रहा है। डेम्पो अपने में फिर से पोजीशन रख के खेलने का कोशिश। खालिद जमील एंड महेश गावली Khalid Jamil and Mahesh Gawli are there in the stands looking after the players they will call for, क्योंकि मैच है, we know national team game is there in November, so they are here in the stands. Dempo is in attacks. Dempo का long shot, विशाल केत विशाल सा एक सेव करते हुए अटैक को रोक दिया। अच्छा शॉट था, बॉक्स में था, टारगेट पे था, शॉट ऑन टारगेट, बट अगेन विशाल सा सेव। ऑलरेडी 3 चेंज हो गया, बैकलाइन में यहाँ पे चेंज किया। आई डोंट नो कितना अच्छा डिसीजन था, बिकॉज़ थोड़ा अटैकिंग में कुछ चेंजेस तो मैं चाहूँगा हो।
बिकॉज राइट विंगर बोलने से आई डोंट फाइंड एनी प्लेयर इन दैट राइट विंग पोजीशन, तो वो चीज वी शुड हैव सीन। रॉबसन के पास बॉल है, रॉबसन इन द अटैक, ज्यादा टाइम लेंगे तो मुश्किल होगा। शॉट था बट गोलकीपर का सेव, ऑन टारगेट शॉट था रॉबसन का। रॉबसन वाज ट्राइंग टू शॉट, टुक अ बिट टाइम टू मेक स्पेस फॉर हिमसेल्फ एंड ही डिड इट, बट या शॉट यहाँ पे कॉर्नर 1-2 विद डीमी क्रॉस बट टू द गोलकीपर। नाउ मोहन बागान has started playing their game. And with that intensity, I don't think it will take much time for Mohun Bagan to score in the match. Just we have to ensure कि यार डिफेंस ठीक से रहे तो फिर मोहन बगान कभी भी यहाँ पे गोल कर सकता है। एंड एक एंड टू एंड फुटबॉल चल रहा है। एक बार मोहन बगान अटैक जा रही है तो दूसरे पल टेम्पो इज गोइंग बैक। तो मिडफील्डर्स हेयर इन द मैच हैज अ लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी टू प्ले, कि वो इंश्योर करे कि ये जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं वो सही से हो एंड प्लेयर्स कैन कमिट देमसेल्व्स इन द अप फ्रंट, तो कि अटैक अच्छे से बने। एंड हियर द बॉल इज विद एल्बर्टो, एल्बर्टो टू अभिषेक टेक्चम। एक लॉन्ग शॉट था बट बहुत ऊपर से, सॉरी मेहताब, लॉन्ग शॉट फ्रॉम मेहताब बट ऊपर से चला गया। थोड़ा सा पावर अच्छा था, पावर अच्छा था बट नहीं। यहाँ पे अटैक का चांस था मैक्लारेन के पास बट वो पहुंचे नहीं एंड उसके पहले ही गोलकीपर बाहर आ चुके हैं। मैक्लारेन ट्राइड रीचिंग बट नो, इट डिडंट हैपन, जिसके चलते पोजीशन इज बैक विथ Dempo, and there is a cross. Vishal Keth is out. Alberto guarded that ball really well. अभिषेक से लेके दूसरे अभिषेक, अभिषेक टू अभिषेक, उसके बाद मेहताब। लेट्स सी व्हाट मेहताब डज। मेहताब से यहाँ पे आशीष राय, आशीष राय एक क्विक 1-2 खेल के क्रॉस बढ़ाए है but there was no player out there to reach in that position and there is a throw in for Mohun Bagan. There's a chance for head, but nahi. Dempo has the ball with themselves again. There was a huge chance for Mohun Bagan to score, but it was not done. But Mohun Bagan still has the position with themselves. यहाँ पे trying to find spaces which Dempo is not allowing. Chance tha again. Jamie McLaren got a chance, but he couldn't score from this position in the 57th minute of the game. Dimi, here we see मेहताब, मेहताब से डीमी, डीमी का एक क्रॉस था, हेड कनेक्ट नहीं कर पाए डीमी का। वो पुराना जो डीमी का पासेस हम देख पाते हैं वही हमने यहाँ पे देखा एंड मैक्लेरन यहाँ पे बॉल को
कनेक्ट नहीं कर पाए अपने साथ, जिसकी वजह से ये चांस जो है वो उन्होंने खोया है। जैसे कॉर्नर है, थ्रो इन फॉर मोहन बगान। Robson lost the possession. It is with Dempo. Nutmegged both Deepak Tangri and Robson. Mehtab cleared the ball out and the ball was with Dempo का कीपर उनके डिफेंस के साथ बॉल है अभी, and they're trying Dempo and end to end action by end to end action. And here's the cross, but Jamie McLaren was trapped between their two defenders, and at that moment, the goalkeeper of Dempo CB came out. Shivi came out and collected the ball. फिर से एक chance था यहाँ पे, but yeah, before he could reach, the goalkeeper was out, and that was something which was done well defensively by Dempo. And the goalkeeper is Do you think Dempo is a better collective team than Chennai? They scored two against EB last day. Well, with that being, I'll answer the question, but Apuya is coming in because midfield में थोड़ा सा stability चाहिए मोहन बगान को, and for that is the reason why Apuya is coming अभिषेक के जगह पे most probably. But a nice question from Shoronil that do you think Dempo is a better collective team than Chennai? Of course, because Dempo is well settled as compared to Chennai. Dempo has been uh, प्रीसीजन अच्छा हुआ उनका. आई फील दे आर फिट इनफ एंड दे आर डूइंग व्हाट दे आर रिक्वायर्ड टू डू with that counter attack based football. They are executing their plans really well, for which they are able to make such performance. uh, Chennai, they didn't get much time to train together, and Chennai also was not, uh, play competitive football after the Super Cup. But yes, they were able to do it. uh, Dempo were able to do it, and they are actually fighting. Yeah, पे 1-1 pass, Robson to Mehtab. Apuya is going to come in at the 60th minute. Half an hour of Apuya magic, Apuya mania we can see out. Dimi lost the position because he was pushed from the back, and that was a foul. Abhishek coming out, and Apuya is coming in his position. But Thapa, Thapa को रहना आना चाहिए था. Robson's free kick. Robson's lofted shot, searching for a header, but no one was at position, and he has apologized for that, but he has done. Akshat Gaming, hello. Hello, Akshat bhai. Ronaldo or Messi? Ronaldo or Messi? Do I have jersey? तो नहीं है. Of course Messi bhai, of course Messi. Of course Messi. Apuya making a way, run. Sahal back to Apuya. Throw in for Mohun Bagan. Apuya has the ball, but गोट तो रोनाल्डो है. किसने बताया आपको गोट रोनाल्डो है?
भाई last live में मैं I have told this thing. Ronaldo is the greatest goal scorer of all time. And Messi is the greatest player of all time. Nothing else. Well, the ball is still with Mohun Bagan. Alberto is searching for ways. यहाँ पे अभिषेक के पास फिर से वापस बॉल आता हुआ and back to Alberto. Defensively, Dempo is doing good. Sahal, Sahal का क्रॉस है, but Dempo cleared out, but ball is settled with Robson. Robson से यहाँ पे अभिषेक का क्रॉस आया है, but goalkeeper will go on and collect it before Jamie reaches at that position. By brilliant performance and with those saves, agar these kind of things, this kind of gameplay if continues, the Tempo's goalkeeper will get a lot of confidence, and after that it will be really difficult to stop him because he will start making some great saves and it will be really bad. एंड यहाँ पे डेम्पो का एक प्लेयर गिरा है अपना पिछवाड़ा पकड़ के, आई थिंक गांड में लगा है उसका, गांड में लगा है उसका बॉल। शुभ्रतो दाशगुप्त तो पूछ रहे व्हाट्स द स्कोर इज स्टिल नील नील एट दिस मोमेंट एंड इट्स 63rd minutes running. What do you think why MB has not been able to score till now? Is MB's attack weak against low block team? There was not very much variations. There was lack of creativity in the final third for which it has been in such a situation. अगर मोहन बगान अपना मिडफील्ड को थोड़ा सा स्टेबलाइज करके यहाँ पे शुरुआत से अटैक करने का कोशिश करता, देन इट वुड हैव बीन पॉसिबल। यहाँ पे व्हेन यू सी वी डोंट हैव एन राइट विंगर एट दिस मोमेंट इन द टीम, तो विदाउट राइट विंगर यहाँ पे पूरा राइट चैनल ब्लॉक्ड है। तो साहाल इज प्लेइंग इन द राइट विंग पोजीशन, तो व्हाट यू कैन सी कि क्यों नहीं हो रहा है अटैक। लिस्टर नहीं है तो लिस्ट नहीं है तो फिर भी रॉबसन उस पोजीशन में अच्छा खेल दे रहा है, बेटर देन लिस्टन। बट व्हेन यू टॉक, वी डोंट हैव अ राइट विंगर इन दिस टीम एट दिस मोमेंट। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट a player who has been playing scam in his whole career? Most of the prime time when he has played as a cam. So you are making him play in left wing, you are making him play in the right wing. I don't know मोलिना क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सहाल से। बॉल इज विथ अगेन सहाल का क्रॉस बढ़ाने का कोशिश है, header from Apuya, but yeah, it was with the players and cleared out again. Mohun Bagan has the position. 65 minutes into the clock, the match was still 1-1. It was a mistake for Jamie not being in the starting 11. Of course, Jamie should have been in the starting 11. We know how much crucial he is for this kind of gameplay, being the fox in the box, making the way, making the runs, making spaces for himself, fighting for the ball. Uh, Jamie McLaren, why Jamie McLaren is important, I have discussed this thing very, very much, very, very time. And with that being said, I believe he should have been there from the start. Cummings could have been there in the second, but I think Molina wanted to give rest to the players for recovery. But fine, it's fine.
यहाँ पे ball is with Mohun Bagan trying to get into the attacks. Ashish try but couldn't reach to the ball and बढ़िया आउटिंग यहाँ पे डेम्पो के गोलकीपर सीवी के तरफ से एंड इट वाज भाई साहल का एक था 1-2 आशीष couldn't understand because he is not in Ashish Rai is playing in the right wing position playing in the back three खेल रहा है मोहन बगान Mohan Bagan is playing back three with Ashish as the right winger. Damn. मोलिना साहब माँ कसम कौन सा नशा करके आप टीम बनाते हो Cummings and Demi are not as lethal and fast as Makka. They should work on the speed and physics. McLaren! What a chance. What a chance. McLaren made a space for himself, but goalkeeper struck the attacking chance. Goalkeeper blocked the angle, but that was a good opportunity for McLaren to score, but nothing out of this attack. Short has to say that Cummings and Demi are not as lethal and fast as Makka. They should work on the speed and physics. Of course, Demi hit the players by. Demi hit the players by. Demi hit the players of Tempo. It could have been easy chance for Mohun Bagan to score from this position, and it's still Mohun Bagan has not been able to score. There was Makka who got the chance again, and Demi tried, थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लिया Demi took a lot of time, to get into the attacking zone. Demi's credit ran out, just like yeah. When Shorny, let me come back to your question. You said that they should work on the Manvir is coming in place of Robson. Manvir in for Robson. Robson who is playing good. He has been taken out. एक सेकंड है एक सेकंड क्यों लेफ्ट विंग कौन कौन खेलेगा फिर chance for set it down, but no one could take the ball. Demi take to heavy touch, heavy touch. Mohan Bagan has exhausted all the substitutions, but Molina sir, Molina sir, I should not call you sir even, but why? Why Robson is out and Manvir is in when you could have substituted Sahal instead, who is playing in his unnatural position? भाई आई कैनॉट अंडरस्टैंड मैं मोलिना के दिमाग में क्या चलता है what goes in the head of Molina and what does he consume to make such decisions what what are you having koi anyone will say that bhai you should go on to substitute Sahal in place of Manvir natural position of Robson it's not an issue for playing in the left wing Manvir at the right wing it's fine Sahal is playing as the right wing. Can you imagine playing deep in the right wing with Ashish actually completing that role? For here, Shornil once said that they should work on the speed and physics for Cummings and Demi. Demi was never a fast player. Demi always used to love to stop a bit, make creative passes. So you can't say him to take that role again at such an age. So his natural game is to wait and then make the way for attacks. You can't say Demi keep you run and run. Demi will wait, will make creative passes, this and that, but you can't expect him to be such fox in the box like Makka. Or that is the reason why Makka is a central forward. Demi is not. यहाँ पे चांस है chance shot but low why they are going for low shots when they know that they can't do anything from that position because Dempo has made 9 players to defend
Nine players are defending for Dempo. Why? Akshat Gaming asking Virat or Dhoni? Both. Both. Corner for Mohun Bagan. Corner for Mohun Bagan. But ball is out and goal kick. Goal kick. Zach Molina. बहुत पहले ही होना चाहिए था. A saying, I'm eagerly waiting for this match to end in a draw. There is still those who are happy that Damian Cummings getting started in the first 11. No, I think the reason was scored because you want Molina might have tried to see how the combination works. But too much experimentation by Molina is ruining everything. Fine, they have started fine, but today they didn't click because midfield was not there. As midfield was not there, it was difficult for both the Demi and Cummings to play the natural game. You have to understand things. You know, Molina, you have to understand things. When which player, if they play, how they will play, how they can contribute to the game, and how they can complement the other players. You failed, you will play this 11, it won't work. You are here in India for the last 1.5 years. You are with this team. You have been to the training sessions. You have more understanding of football, maybe, than me. Still, you cannot click which players will be actually fitting into the gameplay, which player will actually take up that role. You don't have to try something very new. All you have to do is manage the players, get them ready. They're enough to do it. And if this match ended up in a draw, then it will be really difficult for Mohun Bagan because to qualify for the next round, they have to win the next uh, match against East Bengal. Last 15 minutes into the game, Manvir is making that runs. This was missing in the game by no right winger since the start. Maybe come down a bit, bhai. Come down. You're not there to stand. Four players are standing in a line. You have to build the game. Take responsibility. Why are you standing up? Come down and build the game. Manveer, Manveer cross. Ashish in the jungle of players, in the crowd of players, and it's a corner for Mohun Bagan. Decision making has to be questioned. Bro, you are four players standing in a line, waiting for the ball to come to them. Bhai, you come down. You are not in your natural position. Who is going to deliver it into the platter? Chakka by Deepak to the player. Dempo shot again. Sixer by Ashish. Always a sixer. Icardi loves Osimhen, loves Jamie. I want to see all these three together. I hate Icardi, but at the same time, I love Icardi. Love had relationship in a what should I say? It's like a marriage which is unhappy marriage, but still they cannot divorce in such a relationship. Mohun Bagan back in the attack from the back. Alberto Sahal in the left wing.
Cross. It was a great curve, but it was not on target. Just post के ऊपर से चला गया. Just 77th minute in the game, and there is nothing Mohun Bagan could do. I understand MU fans. I understand MU fans when it comes to Demi because it made you very happy and contributed a lot at that time. The same thing is happening for Icardi now. Maka headed out. There's a great chance from Jamie McLaren, but yeah, it was headed out in a corner for Mohun Bagan again. Yeah, I understand. It was something like that. Icardi, big name. Corner for Mohun Bagan. Head, but with the goalkeeper again. Mehtab's head, but फिर से goalkeeper के पास. There was a short cross from Dempo, but it went over, and there was nothing to be done at this position. Abhishek, last 10 minutes into the game. Last 10 minutes into the game. Apuya. Icardi, Jamie I still stand by my offer. I reject your offer. Jamie is going nowhere other than Mohun Bagan. If Jamie is not here, we will be suffering so badly. Bro, Mohun Bagan is also your team. Why you wanting Jamie to be in Galatasaray just because you can meet him? When you come to India, we'll make sure you have a dinner at least with Jamie. Mohun Bagan is trying to build up attacks again across. Dempo is defending. Dempo is defending with all they have. With all they have. It has been too late that Mohun Bagan realized that they have to go for attacks. Foul by foul. Foul of Alberto. So here we have last 9 minutes, and we can see two substitutions tempo. So yeah, yeah. So again, Mohun Bagan is another attacks from the center at this moment, and yeah, pay attacks. Ashish came up for the cross. Dimi, but couldn't connect the shot. Dimi couldn't connect the shot in the box here. Again, Dimi is running, but yeah, the ball is out. Ball is out. Gala or Fenet? Gala, of course. Galatasaray.
get a huge it's a huge confusion for me. And substitution, Amay and Dongle are getting out for Dempo, and in that position, who is coming in? Arnold and Rane. So again, headed out Mohun Bagan, and there's a foul over the Dempo player, इसलिए गेम थोड़ा रुक गया है. Do this again. You asked me to edit, and I will do it. I'll write Gala or Fene here again and do the same. What should I do? Oh, yeah. That's okay, fine. Let's go. Okay, I can take that comment again. You just tell me when you are shooting. I'll do it. Last 5 minutes into the game. Free kick for Dempo. They are into the attacks from the left channel. There's no one to mark here, but yeah, Deepak Tangri was there and he cleared up the ball and throw in for Mohun Bagan. Comment here. A says Gala or Fener. Of course, Galatasaray boy. Who supports Fenerbahce? Chi, shame. It's always Galatasaray. Galatasaray boy. Champions of Turkey. A huge fan of Gala boy. Huge fan. Well, Tempo is in attack is again. Abhishek is with him, and there's a goal kick for Mohun Bagan. Last 5 minutes into the game. Let's see what do they do here. Mohun Bagan. He had a chance for but the ball is with the goalkeeper again. Alberto was there. Bhai, what's happening? What's happening? Dempo is defending so well that Mon Bagan is not getting any answer to all the attacks that they are doing here. Have some shame, bhai. Have some shame. Just outing here by Vishal Keth. Otherwise, this would have been a clear goal for Dempo, bhai. Luften. Ha 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 ha. Luften. Ha 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 ha. Say Simbombom. 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 I don't know what's it is, but Simbombom.
Again is a counter attack for Dempo, but Vishal cleared the ball again out with the match nearly reaching to its dead end. Here, Mohun Bagan and Dempo has intensified the gameplay. Mohun Bagan is trying really hard यहाँ पे to score a goal, but Dempo भी at the same time इतना defensively compact करके अपने आप को रखा है कि जितना भी आप अटैक करने का कोशिश करो, आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा। अभिषेक Abhishek to Sahal. Sahal going to the center region. Dimi got the ball. Dimi has been angle kharab tha, so he couldn't do anything. Ashish took a cross, headed out by Dempo. The ball is still with Dempo. Dempo is clearing out the ball. Last 1 minute into the game. Deepak to Mehtab. Mehtab to Apuya. Apuya to Dimi. Dimi has been trapped between two players. Dimi, oh, bad tackle, but no, says the referee for the foul. Abhishek saying, head by Jamie, but just over the post. Just over the post. Just over the post यहाँ पे चांस था. Last 30 seconds into the game. Last last 30 seconds into the game. क्या होगा? कितना एडेड टाइम यहाँ पे रहेगा? Deepak Tangri, Vishal Keth, ball has been again sent ahead with that 7 minutes. Is it 7? 7 minutes of added time. I don't know for what reason, but 7 मिनट ऐड किया गया है. इतना तो ऑब्स्ट्रक्शंस भी नहीं था फर्स्ट ये सेकंड हाफ में कि 7 मिनट ऐड किया दिया जाए. Okay, chance, but goalkeeper bhai came out and a huge save. Otherwise, there was Alberto for the header. Throw in for Mohun Bagan. 90 minutes plus 7 minutes has been added यहाँ पे. 1-2 passes करके डीमी के पास. डीमी का क्रॉस आएगा, आया भी है, but cleared out by the goalkeeper. अगेन डिमी विल गो एंड हेड, बट फिर से भाई यार प्लेयर के ऊपर टैकल था पंच आउट करने के दौरान, बट बॉल इज स्टिल विद मोहन बगान. पोजीशन रख के अटैक करने का कोशिश मोहन बगान का. क्रॉस, बट बाहर हिट कर दिया ना. गोल किक. मनवीर का हेडर बाहर चला गया. मनवीर का हेडर यहाँ पे बाहर चला गया. अभिषेक टू सहाल. सहाल. सहाल टू अभिषेक. भाई यार बैक पास था ये, पर गलत जगह पे. कोई प्लेयर नहीं था उधर. 5 मिनट और बाकी है मैच में. 5 मिनट, 5 मिनट्स हियर आर लेफ्ट. क्या होगा? सहाल के पास बॉल है. सहाल का क्रॉस,
क्रॉस हेड होगा कि नहीं? गोलकीपर का लास्ट मिनट सेव अगेन एंड द बॉल हैज बीन ट्रैवलिंग अप। यार इतना इजी चांस मनवीर बॉक्स के सामने, ही कुडंट डू एनीथिंग। शॉट लिया, गोलकीपर हाथ से सेव कर दिया। गोल किक, गोल किक फॉर, क्या हुआ? अभिषेक मेकिंग द रन, सहाल अगेन क्रॉस हेड, ऊपर से चला गया। बस सेम थिंग यू आर डूइंग, देयर इज नो वेरिएशन इन द अटैक्स, नो वेरिएशन। वो सहाल उधर से लेफ्ट से क्रॉस देकर कोई हेड करने का जाएगा, बस वही। राइट विंग से कोई अटैक नहीं हो रहा है फिलहाल तो। दिस इज नॉट हाउ यू अटैक भाई, एंड दैट टू हेडर इज नॉट ऑन टारगेट। एल्बर्टो मनवीर दिख रहे हैं। थ्रो इन फॉर मोहन बगान। हेड बट डेम्पो का लास्ट टच था तो थ्रो इन फॉर मोहन बगान। क्रॉस सहाल, बट वो कुछ टच नहीं कर पाए। बेहतर तो उसका यहाँ पे क्रॉस था। शुभाशीष माय ब्रदर इज हियर। शुभाशीष कह रहा है मैच दिखा। भाई कॉपीराइट खिलाएगा क्या? तू मेरा चैनल बंद करवाएगा? मैच दिखा दूंगा तो मेरा चैनल बंद हो जाएगा यहाँ पे। मैंने लिंक दे रखा है, पिन है, गो एंड चेक द मैच आउट देयर। अभिषेक, लास्ट 2 minutes into the game, and there is nothing. You can see nothing, absolutely nothing. अभिषेक अगेन, अभिषेक का क्रॉस, डेम्पो का अगेन हेडर, फिर से अभिषेक, लास्ट टच थ्रो इन फॉर डेम्पो। लास्ट मिनट इज हियर। कोई सब्स्टिट्यूशन होगा या टू सब्स्टिट्यूशंस? लास्ट मिनट में क्या सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो? क्या करेगा ये दो प्लेयर्स आके? 25 और दिस इज कमिंग इन। So Addison Costa is coming out and Beckham Diaz is coming in. Beckham Diaz, nice name. Then this is unacceptable from a tier team like this. हंसो भाई मोहन बगान पे। मुझे मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा है। मैं बोला ना, आफ्टर ऑल दिस आई स्टॉप फीलिंग फॉर एनीथिंग फॉर मोहन बगान। मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, करो जो करना है। आई नो द टीम इज ऑलरेडी गया है हाथों से। इतना इनकॉम्पिटेंट कोच रहेगा, इतना इनकॉम्पिटेंट मैनेजमेंट रहेगा तो क्या ही होगा। धीमी शॉट लेंगे नहीं, मनवीर के पास बॉल दिया है, मनवीर अपने लिए जगह बनाते हुए। मनवीर का क्रॉस था बट या कॉर्नर फॉर मोहन बगान। कॉर्नर फॉर मोहन बगान। लास्ट अटैक, मे बी लास्ट एक्शन बिफोर द मैच एंड्स।
क्रॉस, बॉल बाहर, बॉल बाहर है, बॉल बाहर गया था एंड विथ दैट क्या हुआ? मैच खत्म। एल्बर्टो का डर था, बॉल बाहर गया। मैच अभी भी चल रहा है। थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशंस और उसके वजह से था। गोल किक या अभी विसल बच जाएगा। Yeah, with that, the match ends. Of course, no proper substitution, no tactics, just cross and play. Dempo must be really proud of their game. Dempo must be really proud of the game to stop Mohun Bagan from scoring. क्या बोलूं मैं? क्या सुनना चाहते हो? क्या क्या what you want to listen from me? You just tell. मैं वही बोलूंगा। बताओ आप। And if Mohun Bagan doesn't defeat East Bengal in the next match, Super Cup is out of dreams. No proper substitution, no tactics, just cross and pray. This is not how football is played. But to Lord Molina, this is how football is played. A hopeless of a coach doesn't know the strengths and weaknesses of player, doesn't know about the combinations. What more can you expect from him? What else will you expect from such a team? क्या बोलोगे? मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैंने ऑलरेडी मैं रिव्यू में बता दिया था। मैं तो इसका भी रिव्यू लाऊँगा नहीं। मैं कितना बोल के फ़ायदा, अगर कुछ नहीं हो रहा है तो आप कितना बोलोगे कुछ? You tell to those persons who try to rectify their mistakes. Do you see Molina ever trying to rectify his mistakes? I've always said in the last preview video, review video of the last match, I have said Molina got success in the last season only because of the individual brilliance of the players, not because of his credit. He did nothing. He absolutely did nothing. It was just the individual performance of the players because of which Mohun Bagan played so well and won, not because of any tactics by Molina. This is something you have to understand. And the faster you understand this, the better it is for you. Because जैसे आपने डिसीशंस लिया है मैच के लिए ना, you ain't going anywhere. You ain't going anywhere, Mr. Molina. You ain't going anywhere with this team, with this strategy. You will continuously be struck in the loophole with going down and down and down and down continuously. आप क्या सोच रहे हो? आप क्या सोच के ये टीम उतारे कि ये टीम अच्छा खेलेगी? ठीक है। आप प्लेयर्स को रेस्ट देना चाहे, फाइन। बट क्या आपने जो टीम सिलेक्ट किया था, क्या वो मैच निकालने में सक्षम हो पाते? You had expectations. What was the midfield in this match? Abhishek and Tangri.
Is Abhishek in his career ever played such a role where he was building the game from the back, or he opened up as a CM? I've always seen Abhishek defending. I've always seen Abhishek defending. Then how can Molina expect such a player to complete the role of Thapa, who is a center midfielder? Why wasn't Thapa in this match? Deepak Tangri, you played Deepak Tangri when you have to destroy the other team's attack, not while not while you have to build your own game. Deepak Tangri is not that player who will come and build the game for you. No, Deepak isn't that player for you. Deepak is a destroyer of midfield, the destroyer of attacks of the opponent team. বাজে খেলা পার্থ বর্মন says. Of course, not only bad game, but it's a bad decision by the coach itself to play such a team. No left winger in the last 15 minutes. Huh? Tell me one thing. No left midfielder. Is Sahal a left winger? Is Sahal is a right winger? Is it his natural position? No. Sahal is a cam. And you are making him play at right winger, you are making him play in the left wing. क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो साहल से? क्या करेगा वो उसका नेचुरल पोजीशन ही जो नहीं है, आप उसको उस पोजीशन में क्या एक्सपेक्ट करते हो? जहाँ पे रॉबसन का इतना अच्छा गेम चल रहा था, शुरुआत में खराब था, बट व्हेन इट वाज़ नीडेड, अगर क्या आपको लगता है कि रॉबसन अगर रहता तो गोल नहीं होता? ये जो लास्ट 15 मिनट का गेम हुआ है, चांसेस तो ले रहे थे ना, कुछ और वेरिएशंस देख पाते, कुछ अच्छे क्रॉस देख पाते, कुछ ऐसे सेट पीसेस देख पाते। नो, 75 मिनट्स तक आपके पास कोई राइट विंगर नहीं था। आप आशीष राय को राइट विंगर खिला रहे हो, बैक थ्री खिला के। क्या करना चाह रहे हो आप? क्या? व्हाट आर यू वांटिंग एट दैट पॉइंट? Do you have actually an idea of what is the strengths and weaknesses of your players? Do you actually know your players? Because by the look of it, ekdam nahi. You don't have an idea what you are doing, Mr. Molina. You don't have an idea. आज लास्ट मैच चेन्नई के साथ कितना मुश्किल से अब जीते, आई वी ऑल नो। चेन्नई के खिलाफ मैच मुश्किल था, नॉट बिकॉज चेन्नई वाज गुड टीम, बट द फील्ड वाज बैड, द कंडीशंस वर बैड, आई नो। व्हाट इज द एक्सक्यूज टुडे? आज आप बोलोगे कि कल बारिश हुआ था, मैदान में पानी था, मैं खेल नहीं पाया। बोलो, आप एक्सक्यूज दो कि मैदान में बाकी टीम्स कैसे कर रही है। हाउ कैन दे डू एंड यू नॉट? बताओ। You have one of the best fireworks in the whole India and one of the best in South Asia. Even after that, you have to rely on your defensive gameplay. तो अटैकर्स को क्या करने के लिए आप टीम में लाए हो? I had to be in the press conference भाई। उसको रुला के मैं भेजता आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर वो मिल जाता मुझे, मोलिना, तो उसको मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में रुला के मैं भेजता। उसके बाद मुझे बैन कर दे तो बैन करते, आई डोंट केयर। लेकिन उसको हमारे सवालों का जवाब देना पड़ता। He had to give the answers. That's what I want from him. तो बहुत गुस्सा ये वो कर दिया। He will, Mahesh 7th कह रहे, he will what? You expect him to come up and speak? जो प्लेयर्स के इंडिविजुअल ब्रिलियंस से अपना करियर बचा रहा है, वो आके बोलेगा? क्या बोलेगा? न्यू सब्सक्राइबर ब्रो,
Thank you, boy. Thank you a lot for your support. Thank you for tuning in. I'm really happy. Thank you for subscribing. It was great for seeing the support. Thank you, bye. Really appreciate it. Really appreciate it. But again, मैं रिव्यू वीडियो नहीं लाऊंगा, ठीक है? What I will do is I will आई विल गिव अ रील. ओके, मैं भी एक रील शूट कर ले रहा हूँ छोटा सा. मैं ये सारा पॉइंट्स ही समराइज करके बोल रहा हूँ. इट विल बी इजी फॉर यू टू गेट बैक इनटू एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू रियली कम्युनिकेट देयर. एंड विद दैट बीइंग सेड, इट्स ऑलरेडी 9:30. टाइम टू गेट अ रेस्ट. मैं सुबह से क्लास कर रहा हूँ एंड मैं आके रेस्ट भी नहीं किया. आई हैड कंटिन्यूअस क्लासेस. आई केम बैक फास्ट. आई सैट, हैड अ टी एंड अ कप ऑफ टी. उसके बाद फटाफट मैं रूम में आके लाइव स्ट्रीम शुरू किया, जस्ट टू सी दिस हराम बॉल फ्रॉम मोलिना, दिस गेम प्ले फ्रॉम मोलिना. सो इफ यू थिंक इट्स रियली इजी, ना भाई, एकदम नहीं है. इट्स रियली डिफिकल्ट टू डू इट, but we do it in expectation of good game. But they will disappoint you because they don't care. And until and unless we make them care, they won't. तो जो प्रोटेस्ट चल रहा है मोहन बगान फैंस का, मैंने पहले भी आपको बताया था, आप इसको लेके और आवाज उठाओ. फाइट फॉर इट, फाइट फॉर द राइट थिंग. एंड यहाँ पे शुदिप्तो ने एक बहुत अच्छा ट्वीट किया है. लेट मी शो इट टू यू. लेट मी शो द ट्वीट टू यू. बहुत अच्छा एक ट्वीट किया है. शुदिप्तो लिखते हैं यहाँ पे, you don't know what I League is, Mr. Molina. You don't know what difference fans can make, Mr. Chakraborty. You don't know how football works, Mr. Goenka. And this is the absolute reality. This is the absolute reality here in this situation. Molina had, underestimated I League, and that is where he lost. Molina underestimated I League, and there he is lost. And Ratan Chakravarti said, media manager of Mohun Bagan said that fans make no difference. You won't do anything from the stands. You see what fans can do. आपका ये मिड टीम को लेके अगर आप जीत पाए तो वो फैंस के वजह से ही हुआ था. भूल मत जाओ. एंड गोयनका सर, you have to take some tough calls if you want this team to be the best again, because as things stands, जो फेवरेटिज्म टीम में चल रहा है, you won't make anything out of it. चलिए कुछ ट्वीट्स देखते हैं अगर आया हो. लेट्स सी व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट. भाई ट्विटर ही काम करना बंद करके मैं जब स्ट्रीम कर रहा हूँ. डैम, ट्विटर ही काम करना बंद कर दिया. चलिए नथिंग टू से मोर. नथिंग टू से मोर एट दिस मोमेंट. भाई मैं कुछ नहीं कहूंगा. आई एम रियली disheartened and things tough calls has to be taken. Thank you for everyone who tuned into this live stream. Appreciate it a lot. Thank you for being there and supporting. नेक्स्ट लाइव होगा डर्बी या नेक्स्ट आना पड़ेगा, आऊंगा. गाली गलौज होगा उसमें, बिकॉज अगेन आई हैव नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द टीम एट दिस मैच, बट आई विल डू इट. तो
आप सब आइएगा प्लीज. आई विल मेक ऑल द अनाउंसमेंट्स इन माय सोशल मीडिया हैंडल्स. सो इफ यू हैवंट येट फॉलोड माय सोशल मीडिया हैंडल्स, द डिस्क्रिप्शंस में लिंक है, तो जरूर हमारे सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट हो जाइएगा. एंड आई कीप ऑन डूइंग सम ग्रेट वर्क्स इन इंडियन फुटबॉल, तो वो सब भी मैं उधर ही अपडेट देता रहता हूँ. तो काइंडली ट्यून इन टू माय सोशल मीडिया हैंडल, सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा. वहाँ पे मैं सारा अपडेट्स देता हूँ, जो भी मैं फुटबॉल रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे मैं यूट्यूब के साथ साथ बहुत सारा प्रोजेक्ट्स में भी काम कर रहा हूँ फुटबॉल रिलेटेड, तो वो सारा अपडेट्स मैं वहाँ पे देता हूँ. तो आप फॉलो कर लीजिएगा. एंड दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस लाइव स्ट्रीम. थैंक यू एवरीवन फॉर ट्यूनिंग इन. Appreciate that you came in and spent this evening with me. And I hope we spend more good times in the upcoming matches. So वीडियो लाइक अच्छा लगे, लाइव स्ट्रीम अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा. कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा आपको द मैच एज अ होल एंड द लाइव स्ट्रीम. एंड कुछ अगर सजेशंस रहेगा तो जरूर हमें बताना. एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा. वी नीड योर सपोर्ट टू कीप ऑन डूइंग द हार्ड वर्क. बड़ा अच्छा कंटेंट यहाँ पे आएगा. एंड शेयर कीजिएगा हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ. विल बी मेकिंग सम गुड थिंग्स, good contents out here, and I want everyone to have a watch at that. So this is Soumyadeep signing off.